I'm so glad that we are doing this today. एंड मिस्टर शाह, दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आज के लिए आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने के लिए मैंने कोई क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं करे हैं. We'll keep it like a conversation because at the end of the day, we want this to be meaningful for somebody who really could benefit from this conversation. हरविंदर जी देखिए, मैं एक चीज है ना बहुत क्लियरली बिलीव करता हूँ कि जब है ना रब्बा की विश होती है ना तभी काम होता है. एंड यू नो व्हाई, सी देयर आर टू, ट्रस्ट मी. आपने कल जो मुझे टेक्स्ट किया, आई हैव एग्रीड ऑन फॉर सिंपल रीजन. देयर आर टू very valid reason. Number one, these days, Navaratri, highly auspicious time, which is going on, and particularly in Gujarat and Ahmedabad, Navaratri is celebrated like anything. It starts by 9:30 and it's around 2 o'clock or maybe 4 o'clock. You never know, and you find colors and people are, I mean, roaming around in Garba and everything. Fantastic. And last but not the least, today is 8th, Yeah. 8th, 8th of October. So there are two reasons. See, I consider number 8 as a अष्ट मतलब 8 महा means big city, अष्ट महा city. And say, I mean, of course I'm Jain and following Hindu religion, but see, I believe in just one religion, that is humanity. So it is sheer coincidence कि आज अष्टमी है, नवरात्रि है, and whatnot. And आज on top of that, I don't know if you are believing or not, but आज गणेश जी का भी मंगलवार है, ट्यूसडे. सो गणपति का भी आज बड़ा ऑस्पिशियस डे. सो यू नो मैंने आपको वही बोला कि जब रब्बा की इच्छा होती है तभी वो प्लान करते हैं. एंड it is being planned, you know I mean, without any preparation. Yes, I and I've been wanting to come to Gujarat during Navratras, and I promise you today that next year Navratra I'm going to celebrate with you. Uh, Sir, sir, आप नेक्स्ट ईयर आप मैंने फिर आ जाना. अभी 4 दिन सैटरडे तो लग बाकी है. ट्यूसडे आज शाम की फ्लाइट पकड़ के आ जाओ. एंड लेट्स हैव अ बिग सेलिब्रेशन. I don't promise, but I will definitely try, sir. जहाँ पे ऊपर वाले की इच्छा होगी अपने आप चीजें निकलती हैं. बिल्कुल. I completely believe in that. And yes, I mean, fortunately, one thing I would like to add, aligning with what you said, Devinderji, I am not prepared for questions, etc. And this is I always prefer while I'm being asked to speak for interview podcast, because jab when you are not prepared, you are talking from your heart. And Absolutely. when you are talking from your heart, there is no chance of manipulation. सब अपने आप आ जाता है. बिल्कुल, बिल्कुल. सो शरणिक जी, आपको शायद पता ही होगा कि हमारा पर्पस क्या है इस पॉडकास्ट का, इस कॉन्वर्सेशन का. दैट आई एम compiling a book which is a compilation of such conversations that I've had and I'm having, not only with survivors, with patients, with oncologists, with spiritual masters, with therapists, trying to understand कि आप जैसे लोगों को हम बोलते हैं कि विल पावर बहुत स्ट्रांग चीज होती है. बट मेरा मानना ये है कि विल पावर जो सी है वो कुछ नहीं होता है. विल पावर एक करेज का आउटकम होता है. एंड ये सम पीपल से कि विल पावर इसमें है दूसरे में नहीं है. मेरे को लगता है कि विल पावर हर एक इंसान में होती है, लेकिन किसी को किसी चीज के लिए विल पावर होती है, किसी की किसी और चीज के लिए विल पावर होगी. आई मे नॉट बी
demonstrating that willpower to go for a walk in the morning. But for something else, I will do whatever I can to make that happen for something else. सो उसको मानते हुए कहीं ना कहीं करेज होता है जिसका आउटकम विल पावर होती है. एंड कैंसर एक ऐसा कंडीशन है जिसमें डॉक्टर और मेडिसिन जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन इंसानी इच्छा ऑफ द पेशेंट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि वो जीना चाहता है या नहीं जीना चाहता है. वो डिपेंड करता है, उस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे इस कंडीशन को फाइट करेगा, विच इज वाई यू नो लॉट ऑफ पीपल चूज टू कॉल कैंसर सर्वाइवर्स एज कैंसर वॉरियर्स, rightfully so, because it's a war that they have won. And आपने so this is going to be a part of my book as well. So Shrenik ji, you have been a warrior and you have survived cancer twice. It is not once but twice. पहली बारी जब आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, वो कैसे हुआ? ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपने जाके टेस्ट किया? क्या सिम्टम्स थे जिसकी वजह से आपने टेस्ट किया और आपको ये डिटेक्ट हुआ? Thank you, Harbinder ji. Let me admit one thing in the first place that I had no habit of smoking, never consumed tobacco. I am not even alcoholic and I'm strict vegetarian. Uh, you know, in 91st half of 1997, my natural voice, my natural voice started from normal to hoarseness, and I went to ENT surgeons rather. They did scopy and everything, but somehow they could not detect that cancer is occurring on my vocal cord. Subsequently, the from normal to hoarseness to whispering. Now, whispering, that was okay, but then during the month of August 1997, that is before 27 years, I I suffered unbearable breathing issue. Unbearable, unbearable. That means I was always feeling day and night. I was always feeling like I am sinking in the water and unable to swim and rather desperate to breathe. And on the other hand, I started losing my weight, losing my weight. So say around 10 kilos or maybe 15. I don't remember. Ravinderji, you'll be surprised. I had an office on the fifth floor in the building. When I was getting into elevator and while standing and going from ground floor to fifth floor, even while standing, I was sleeping. In between first ground floor and fifth floor, I was sleeping. And trust me, I had no idea like what is really happening. And then one morning, I started bleeding in my cuff, and I went to see my family physician friend, Dr. Trivedi, and he said, Shrenik bhai, this is not done. This is not done. You must have to see the cancer surgeon right away. And he called up, and me and my wife Neelam, we went there. Doctor saw me like I was breathing desperately, and he did initial examination, and he was, I mean, he was at that time, I guess he was 37,
and MSMCH cancer surgeon from GCRI, and he said that I suspect cancer of vocal cord. Now, when he said cancer of vocal cord, trust me, Arvinderji, it did not shake me or my wife. Trust me, it did not shake me or my wife. You know why? Because the priority was breathing. I mean, priority was survival. Because if I don't survive, then whether you have voice or you don't have voice, it hardly matters. And so it's a like Shrenik Bhai, unfortunately, you don't have too many days to live with unless you undergo massive surgery and we'll have to perform scopy and let's say I can just come to know only after biopsy and everything is done. So Arvindarji, at that time my eldest son he was in Sydney. He was there for that study, and my younger one he was in 12th. So we instantly asked one simple question: okay, when do you want me to get admitted? And another thing, we did not ask single question to anybody. They can say logic is very simple. I consider life as a Rolls Royce. I consider life as a Rolls Royce. Or when life is like a Rolls Royce, that means आपने ना रोल्स रॉय को स्कूटर वाले मैकेनिक के पास नहीं ले जा सकते because what could be the outcomes. So without asking single question, and I mean we did not inquire about his credibility, we did not inquire about anything, just we have trusted blindly blindly in the scales of doctor, and on the other hand even we did not think of even taking even second opinion either. And so next day I was admitted. Now uh, when when I got admitted, here again the priority was coming back to normal, coming back to normalcy of my breathing. Now when this copy was done, Harbinder, this is very minor point to be noted, and I would like you to pinpoint this in the book, in the podcast. By default, the intelligent and timely decision by the medical professional can make things happen, can create magic, can create miracle. I'm using the word miracle. So when this copy was done, Arbitaji he found a big tumor on top of my vocal cord. It was of course cancerous, but unless pathological report comes, you cannot come to any conclusion. But the irony was the tumor was blocking the opening of my trachea, the windpipe, through which I was, or rather, through which everybody is breathing. And the deep, the tumor was so big that the opening of trachea or windpipe was as small as a tip of a pen, and that was causing unbearable breathing issue. So
You know what? What it did? It punctured my throat. If yes, look at me dirty. At times, people don't want to share such kind of situation or such kind of physical, physical. I don't know. I mean, physical aspect of your on your body or on top of your body. So he performed 1 inch diameter hole in the middle of my throat, in the middle of my throat. And why I am telling this, because that opening, that puncture, that 1 inch diameter given me life to zero. And in too many of my talks in medical colleges and particularly cancer conferences, I am telling that the tracheostomy, the 1 inch diameter of the hole in the middle of my throat, is like 8 lane, not 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lanes super express highway to breathe. I can breathe easily without any problem, and since that day I never felt any issue. But that was not the end of the story. So the biopsy was done, and in those days liquid biopsies option was not available, and reports were coming after 4, 5, 6 days. And when the pathological report came, I was into stage 4A. Stage 4A, that means super advanced stage. And normally when oncologist is telling that you are into stage 4, that means in the back of your mind, for this for the patient as well as for the caregivers or all family members and even friends or whoever is connected with you, they know for sure that you know ये अब लंबे पारी खेलने वाला बैट्समैन नहीं है। उनको पता लग ही जाता है कि लाइक चलो 1 साल 2 साल 5 साल अरे 10 साल तो बहुत हो गई। And well, and then so now this is my 28th year after stage 4, a stage 4 vocal cord cancer. Now, Awesome. uh yeah, thank you. So and then so the first part was scopy, throat was done. Letting go, I would say, the medical terminology is laryngoscopy. That was the first phase. And then after the report came, there was a massive surgery done, which lasted for about 9.5 hours. The I underwent wide field section of opening on from both sides of my throat, and surgery was performed. Now, Harbinder ji, see, I want to share two important experience just just before my surgery. My guru, as I said, I'm following Jainism. So, and our gurus, they don't use vehicle, they walk barefooted. So when my guru came to know about I am undergoing massive surgery, he walked more than 5 kilometers. He walked 7 o'clock in the morning. He walked more than 5 kilometers and came personally to to deliver, or I would not say कि उनको उसको मांगलिक बोलता है, मतलब I mean like it is a kind of a blessing, मांगलिक, so मांगलिक सुनाया, and then I went
say, Ravinderji, you mentioned about courage, you mentioned about willpower. So when I was laid down on the operation table, I asked the surgeon that can I have a pen? He said, why you want pen? I said, give me. And Arvinderji, on the right palm, this is my left, but on the right palm here, I draw one symbol. That symbol was the most auspicious symbol in Jainism. I will just quickly speak the mantra. It is Namo Rindanam, Namo Sindanam, Namo Irianam, Namo Vijjanam, Namo Loe Somachaunam, E Somachanamagaro, Somabam Najano, Manganajas, Vesim, Madamam Vai Mangalam. This is the most auspicious Naukar mantra. So I draw that symbol with the pen on my this mount, or yeah, this mount is known as a mount of Venus Shukra, and Shukra mount of Venus provides life. Mount of Venus is known as a, I mean, it is made of luxury money. That's secondary, but agar life है तो बाकी का सब कुछ है, otherwise it is of no use. So if I could survive, then बाकी का सब कुछ हो जाएगा. And then my surgery was done. I came out after nine or maybe 10 hours with the rice pipe and everything. 1 week later, I was discharged from the hospital, and then doctor said that you were diagnosed into stage 4. You will have to undergo radiotherapy as well. So I said fine. Harbinder जी मेरा एक सिंपल अप्रोच है कि accept the situation, accept the fact, and accept the challenge, and accept the adversity. अब क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह, that is important. अब आगे क्या, अब आगे क्या. And you're very rightly given example of warrior. देखिए, when I had a severe breathing problem, trust me, Arvinderji, it was literally, literally encountered with the death. I had witnessed the death so closely that अगर अगर देखिए सोल्जर को जब गोली तो लगती है ना तभी उसको पता चलता है कि इसका दर्द क्या है. तो वो दिखाने से सोशल मीडिया में कंटेंट लिखने से कुछ नहीं होता है. You have to experience it, and that's what I had experienced. But you know what, Arvinder, that encounter with the death, literally encounter with the death made me fearless, made me fearless for the lifetime, absolutely lifetime. Up and I am never scared for anything like what is going to happen even after 1 minute. And therefore, you know, I have made up my mind that in the life there is nothing like tomorrow. There is nothing like tomorrow. I don't make list. I don't make list of doing things tomorrow. आज का काम आज करो, सो जाओ, कल के बाद कर. And that's how, and then I underwent radiotherapy, 30 rounds. The skin uh, turned into black like a charcoal graphite. But then it came around
and that was the situation. Now, Arvindaji, what is more important? Say the daily life. The daily life becomes silent without spoken words for anyone, for the entire human being, and this without spoken words. That means it is causing quite a catastrophic situation filled with anger, frustration, depression, sheer helplessness because you want to speak, but you cannot communicate, you cannot speak when you are the best in the world. I mean, I was into international marketing, and आप जानते हैं कि मार्केटिंग में जो बोलता है वही बिकता है. वी आर सीइंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, दिल्ली हो, अहमदाबाद हो या यूएसए, कहीं भी हो, जो बोलता है वही बिकता है. And so I lost my natural voice forever. One more point I would like to add, and this again, I mean, if you like, you can pinpoint when my doctor said that you will not be able to speak for the lifetime naturally. There was zero, there was zero regret, there was zero challenge because for me priority was survival. अगर लाइफ नहीं है तो वो इस है तो भी क्या, नहीं है तो भी क्या. It is as simple as that. And so that was my initial story. I mean, from diagnosis until going the radiotherapy and so on. So, Uh, Shrenik, yeah, before you go further, I mean, when the doctor, when you were told that, you need to go, you went to the doctor and the doctor said you need to go to an oncologist immediately. And when you went there and it was detected that you have cancer and the tumor was on the vocal cord, what was your first emotion? And what was the emotion of your wife who went with you? आपको उस टाइम क्या लगा immediately? zero. जीरो. मैं एक बात बताऊं, देखिए मैंने आपको आगे भी बोला था, फिर एक बार आपको बोलता हूँ कि अगर आपकी लाइफ रोल्स रॉय की तरह है और अगर गाड़ी में इंजन नहीं है और आपके पास गाड़ी है, इंजन है, लेकिन कार चालू करने के लिए अगर चाबी नहीं है तो रोल्स रॉय है तो भी क्या, नहीं है तो भी क्या. It is as similar. So trust me, not only for me, even for my wife. See, we are having complete equilibrium in the thought process. Okay, now let's troubleshoot. अब जो हो गया है उसके पीछे रोने से अगर राइट फैल गया तो बोले फैल गया, अब आगे क्या. That is important. And And were your so kids? How old were your kids then? the elder one was 20 and the younger one was 18, and I was the only earning member in the family. Mm-hmm. Hanji, sir. So you were telling me that you went through 30 rounds of radiotherapy, and uh, how long did it take for you to be seen or considered as a cancer survivor, as per the terms? Say again, आप जरा I couldn't gather. आप जरा फिर बताइए. एक सेकेंड, आपको मेरे वो ठीक आ रही है? शुड आई चेंज द इंटरनेट? नहीं चलेगा अभी. आई मीन बीच में कभी जाता है, but now एक सेकेंड सर. yes. हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक for you to be considered as a cancer survivor the first time? Normally the standard protocol is 5 years. Standard protocol is 5 years. Like if you survived
for 5 years. That means, it is saying that you are cancer free. That is the overall assumption. That is overall assumption. And when did you start using this machine for being able to speak? Yes. Now, देखिए Harbinder ji, yeah, no, this is again, uh, this incident or this experience will remain close to my heart forever. So 3 months after my radiotherapy and everything, I had to use pen and paper to communicate, which was absolutely frustrating because you cannot write at the speed of your tongue and किसी को लिख के देना वो पढ़ेगा बाद में वो रिस्पॉन्ड करेगा फिर आप है ना आपको फिर लिखोगे so that was kind of disaster devastating situation but fortunately my cancer surgeon he advised me that you will have to use electrolytics. This device is known as electrolytics and is manufactured by the subsidiary of Siemens in Germany. So we got this device from US. Now in those days in India there were no speech language therapists available. I mean, the short format is SLP or speech language therapist SLT, whatever you say. So, speaking with this device, I did not. I had no trainer available, particularly in Ahmedabad, and even it was not that popular in those days. Currently, Abhinaji, currently there are 72,000 speech language therapists in the US and over 10,000 in UK. And yes, there are several even in India. Now, the important point was I had no idea how to speak, how to use this device, and the important aspect was finding finding a sweet spot under your chin where you place the top of this device, which can come into contact with your muscle. And when you start speaking, the the movement of muscle is turning into sound, and then you can communicate. Now, the important point here again is I practiced for 1 week by standing in front of mirror and I learned speaking to the extent that I could find a sweet spot under my chin and this sweet spot is here which I am using for last 27 years now. So वो बात हो गई कि I learned I could find sweet spot. Now the funny thing and the irony was when I started speaking in public for the first time, Ravinderji, my voice got rejected. People were scared. People were running away. They have never heard such kind of voice or such kind of sound before. So मैं अगर आपके पास आया और मैं बोलूँ हरविंदर जी कैसे तो आप मेरी तरह आप ऐसे देखेंगे और है ना आप भाग जाएंगे क्योंकि आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है but and so I got countless rejection from public but you know what Harbinder ji that those not that those rejections
those rejections ignited the fire. Those rejections ignited the fire from within, that I am not on this planet to give up, and जिसको जो लगने लगे, जिसको जो करना करे, जिसको सुनना है सुने, नहीं सुना तो नहीं सुने, लेकिन I am going to speak, and I have followed one formula कि जो बोलता है वही बिकता है, and if I will stop speaking, that means I have to lead retired life. I cannot accomplish anything. When I was diagnosed with the vocal cord cancer, I was on top of my professional career as an international businessman. I have traveled to more than 37 countries, more than 200 overseas trips, and I must say I have spent 80% of one decade, 80% of one decade at 37,000 feet, because I was traveling like hell. So that was my previous story. But yes, I must admit that my exposure in international marketing, dealing with all kind of people and accomplishing my business and goals and everything, enormously helped me to become a global auditor, thought leader, and whatnot. So that was the story. So trust me, Harbinder ji, I am, though I छोड़ेंगे, I am grateful to every single individual who ran away, who rejected my voice, because if they would have not rejected my voice, I would have not been speaking now in front of you and would have been participating or other for your book. So this is my journey of vocal cord cancer, uh, vocal cord cancer victim to survivor to whatever you say, and I must say I prefer not to use the word warrior or thriver, because I am absolutely a common man, and I am so much fortunate. Like I am from hospital bed, I got featured at iconic Times Square as a motivational speaker without spending single penny on 23rd July 2023 every hour without spending single penny, and I am the first vocal cord cancer survivor who got featured on iconic Times Square, and I'm super proud Indian, being the world's first TEDx speaker. As a vocal cord cancer survivor, I have delivered 4 TEDx talks in last 3 months. This is brilliant, Mr. Shah. What was your business when during your initial days when life was normal? What was your main business? Surgery. I was selling cutters. I was selling cutters for textile, cutters for leather, cutters for paper, cutters for paint. So in general, वो जो है ना अपना Narula का एक advertise है. Wherever you see, you will find us same with the things. मैं what paint nahi karta tha, but I was fortunate of painting the life of the people through textile, leather, paper, ink, and so on. So I was exporting the colors, and I want to add one thing. My frequent traveling was so much that my Belgian customer, he was calling me cowboy, because there were instances I was boarding 7 times. I was boarding 7 times in an aircraft in 30 hours, 7 times in aircraft, like Ahmedabad to Delhi, then to Amsterdam, Amsterdam to Brussels, Brussels to Amsterdam, and then to
to Athens and then to Thessaloniki, that is internal city of Greece. So I was more मतलब काम finish हो गया भागो काम finish हो गया भागो. It was like that. So but I mean, I must say it was a fascinating journey ever. And when did you shut that down, that business? No, no, I'm still continuing, but same अपन ऊपर वाले की क्या फिर मिले वो मुझे पता नहीं है लेकिन so now I am much more focused on public speaking, counseling, advocacy, and like uh, doing what your best ability I have, and yes. नॉर्मली एक बात आपको मैं इधर ऐड करना चाहूँगा कि despite speaking disability currently I'm 72. Normally start की जब एज आती है people start thinking कि भैया बहुत काम कर दिया अब है ना आराम का टाइम है but there is zero retirement plan to the extent I am going to work till my mind and body supports me. And one more thing I would like to add here. देखिए आपने जब शुरू में बोला था कि ये let's have a casual conversation, no pre-planned questions or answers. So I, I mentioned a few minutes when I am 72 now, and I admit and rather we know that I don't have another 72 years to live with, and therefore I am always into taxi mode, seatbelt fastened, always ready to take off. Yes, I am committed to touch horizon, and another point on my wings. On my wings, I am surrounded 360-degree by countless well-wishers from all over the world. These well-wishers are like my engine. These well-wishers are like my fuel, and these well-wishers letting me giving me a boost like a turbine power, like power to touch the horizon. And I'm humbled to mention that I am super fortunate that until now I have delivered more than 8,000 hours of talks, fortunate to touch over 100,000 lives globally, paid international conferences, hospitals, medical colleges, universities, TEDx talks, podcasts, I mean, you name it. And the another key aspect that wherever I have delivered talk, perhaps I'm having a privilege, I'm having an honor, fascinating honor that I became the first speaker wherever I went to deliver my talk as a vocal cord cancer or CLRing survivor. So देखिए एक आपने जो बोला था ना कि you need to have a willpower, लेकिन willpower में क्या है देखिए अगर आप 10 रुपये का 10 रुपीज का अगर कॉइन या एक भी कॉइन पकड़ेंगे ना तो कॉइन के एक साइड में टेल और दूसरी साइड में वो की तो तो मतलब क्या है पता है कि एक साइड में करेज है एक साइड में कॉन्फिडेंस है and then you have to roll on the teenage you have to roll on a teenage of the coin and then when you started uh, rolling yourself on a teenage. That means you need to balance. You need to balance yourself. कि आप गिर ना जाए, right? So you are always conscious. But what happens? Do you know what is the advantage when you start rolling on the edge of the coin? You have incredible, fabulous, fascinating opportunity to roll yourself 360 degree vertically and horizontally. And
that is the beauty of life 2.0. That is the beauty of manifested life 2.0. Fantastic. Mr. Shah, I mean, हम बात करते हैं तो every time it is mentioned that you're a two times survivor. When did the first recurrence happen? That was when I was diagnosed. Sorry, I mean I underwent the test by two ENT surgeons, but they could not diagnose. So that was my first step, first survivorship, and then I was actually diagnosed with the cancer. And well, you rest in this story. By the way, Harbinder ji, or since you are making note, and since you have interviewed so many oncologists and others, you know, there is one important medical terminology, and I want you to make a note. That is important terminology in medical field is STMN. STMN. That is short-term memory loss. Short-term memory loss. Now, now I could. I am fortunate. देखिए मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैंने ये किया है. No, it is God will. I could rephrase. I could rephrase that STMN into LTSMN. LTSMN. Long term specific memory loss. मैं अरविंदर जी भूल गया हूँ कि मेरे पास में नेचुरल वॉइस नहीं है, या आई एम हैविंग अ स्पीकिंग डिसेबिलिटी. Fantastic. Fantastic. I mean, this is so powerful. मैंने actually note करा है ये चीज. कि कई बारी हम जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, हम एक चीज के पीछे उसको जहन में रखते रखते उसको हम अपनी रियलिटी बना लेते हैं और हम उसके विक्टिम बन जाते हैं. ठीक है. ऑल्टरनेट थिंग इज दैट आप भूल जाओ कि जो हुआ, बिकॉज वो तो पास्ट हो गया. जैसे आपने बताया कि आपके और आपकी वाइफ ने ये सोचा था कि जो हो गया उसके बारे में क्या सोचना है, आगे क्या है. एंड आपने जब अपनी कहानी सुना रहे थे, आई वॉज जस्ट लुकिंग एट, आई मीन बॉर्न ऑप्टिमिस्ट. अपने लिए भी, एंड जब मैं व्हेन आई स्पीक टू अदर पीपल आल्सो आई सी द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स. एंड द रीजन आई आस्क्ड यू दैट आपने अपना बिजनेस बंद किया था या चल रहा है, क्या है आपके बिजनेस में, पैसा था, सक्सेस थी, यू आर ट्रैवलिंग, मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, बट आई थिंक यू नो what you do today has given you an identity. you know so और वो आइडेंटिटी जो मिली है, वो शायद अगर ये सिचुएशन ना होती तो आपको एक यूनिकनेस, वर्ल्ड स्टेज, अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू पीपल्स लाइव्स वुड हैव नेवर हैपेंड. ठीक है ना. सो आई थिंक जो होता है वो अच्छा नहीं है, लेकिन उसके जरिए से कोई अच्छाई हो जाए तो फिर आपको पर्पस दिखना शुरू हो जाता है. सर जी, सर जी, देखिए मैं एक बात बताऊं. आपने आगे भी बोला था, मैं आपको फिर बताऊं कि मैं ये जो हुआ ना, सो देखिए, अगर शायद मेरी बात सुनेंगे लोग तो बोलेंगे कि ये आदमी पागल है. चलो पागल है तो पागल, लेकिन फॉर मी दिस was incredible, fabulous, fascinating, remarkable, divine intervention for simple reason कि 1985 में I was introvert. I was always worried. I was always withholding myself to speak in public. I had only 5 friends, और आज पूरी दुनिया मेरे साथ में. सो देखिए, कि मैं ये बोल रहा समझता हूँ कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है. एंड प्रोबेबली
शायद मैं ऐसा समझता हूँ कि लॉर्ड कृष्णा या गॉड has given me incredible enormous opportunity to do something which I could not do it, or rather I had not courage to do it in my life 1-0. And that's how I am consistently and confidently showing up on a global podiums. अब है ना देखिए आप, चलिए मैंने तो शायद मेरी शादी हो गई है. I mean next in January I would be celebrating 50th year of our wedding, but मैंने ट्रस्ट में और आपको पॉइंट पिन पॉइंट करने तक कर लीजिएगा कि मैंने पोडियम के साथ में भी एक दूसरी शादी कर ली है, और सुप्रीम कोर्ट भी है ना उसमें मुझे नहीं रोक पाएगी. आई नो फॉर श्योर. नहीं, दिस इज ब्यूटीफुल सर. मेरे जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, स्पिरिचुअल गाइड हैं, वो भी कृष्णा के डिवोटी हैं. इनफैक्ट लोग उन्हें कृष्णा का ही अवतार मानते हैं. और वो यही बोलते हैं कि जब कभी मुश्किल आती है तो वो मुश्किल नहीं है, वो भगवान की तरफ से दस्तक है टू डू समथिंग एंड टेक एन एक्शन. सो आई थिंक दैट इज रियली पावरफुल. एंड सर सर मुझे दो बात और बोलनी है, फिर आई विल आंसर whatever questions you have. And देखिए मेरी स्टोरी ऐसी है कि we have started today's session at 9. अगर कल मॉर्निंग 9 तक भी चलेगा ना तो आपको ना ताजुब नहीं होगा. टेल लेट मी टेल यू. सो देखिए मेरी माँ, my mother's name is Sharda, Miss Ma Saraswati, and I am the youngest member to my parents, or rather I was youngest member to my parents, and I am I am super blessed by my mom Sharda Ben for making me the proper speaker. She has enormously helped me to build bridge between it, art and God, and that's how I did not have to put on any efforts while delivering talks, giving interviews, podcast participation, or anything. And yes, one more thing, because आपने जब लॉर्ड कृष्णा की बात की, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि when I am speaking, whether it is counseling, advocacy, interviews, whatever, or even TEDx talk, I am unconditionally blessed by Lord Krishna. आप believe नहीं करोगे, but this is the fact कि मुझे I feel like I am in Vrindavan, and that's how I mean I never have to manage. I never have to think. I keep on speaking and speaking without any kind of preparation, or rather without any thoughts in the back of my mind. मुझे ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, कुछ नहीं. And this cannot happen without divine intervention. Trust me, trust me. मेरे को एक चीज बताइए कि यू नो यू वर टॉकिंग अबाउट डिवाइन इंटरवेंशन. हाउ इम्पोर्टेंट इज स्पिरिचुअलिटी और अ स्पिरिचुअल माइंडसेट for a person to come out of the situation? Because हर एक का अपना एटीट्यूड होता है. आपने बहुत स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया. आपका एक एटीट्यूड था कि मेरे को पिछला जो है हो गया, आगे क्या करना. हाउ इम्पोर्टेंट इज स्पिरिचुअल माइंडसेट फॉर पीपल टू रिकवर ऑन दिस पाथ टू बिकमिंग अ सर्वाइवर? सर सर मैंने मेरी बहुत सारी टॉक्स में, इंटरव्यूज में मैंने बोला है कि दिन के आपके पास में 1440 मिनट्स है. आपके पास पर डे यू हैव 1440 मिनट्स अवेलेबल. आपको है ना 20 20 मिनट्स 20 मिनट की चोरी करनी है फॉर सेल्फ. 20 मिनट 20 मिनट्स
कि चोरी करनी है फॉर योर सेल्फ, फिर आप व्हाट्सअप करो, फेसबुक करो, जो भी करना है करो, बट 20 मिनट की चोरी आप खुद के लिए करो। सुप्रीम कोर्ट आपको कहीं नहीं रोकेगा। एंड वाई? allocate minimum 12 minutes, allocate minimum 12 minutes for meditation and 8 minutes for music listening music। जो भी आपको पसंद है गाना सुनो, एक का एक गाना 10 बार सुनो। But see, I have been meditating for last more than 30 years, and even today, I am spending an hour to 10 minutes in meditation. And you know what? मेडिटेशन करने में एडवांटेज क्या होता है पता है स्पिरिचुअलिटी में? कि जो सॉल्यूशन आप देखिए, मेरी जो भी बात आपको ठीक लगे पॉइंट आउट कर लेना। मेडिटेशन करने से जो सॉल्यूशन आपको वेब ब्राउजर में नहीं मिलेगा, गूगल में नहीं मिलेगा, काउंसलिंग में नहीं मिलेगा, मेंटल थेरेपी से नहीं मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी गुरु से नहीं मिलेगा, वो सॉल्यूशन आपको मेडिटेशन में से मिलेगा। and and that solution you are getting for free। आपको है ना ऑक्सफोर्ड में पढ़ने को जाने की जरूरत नहीं है, हार्वर्ड में पढ़ने को जरूरत नहीं है। एंड यू डोंट नीड टू अप्लाई कि आज 1 लाख रुपया भरो, 5 लाख रुपया भरो, न्यूयॉर्क जाओ, इधर जाओ। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, just simply speak to meditation and सब सॉल्यूशन आपके सामने क्रिस्टल क्लियर दिखेगा, क्रिस्टल क्लियर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। आपने जिस तरीके से बताया, आई थिंक इट इज रियली ब्यूटीफुल। व्हाट इज मेडिटेशन? आप किस तरीके से करते हैं? बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं कि आंखें बंद करो, वाइट लाइट देखिए। कुछ लोग बोलते हैं आप सिमरन करो किसी के नाम का, और कुछ लोग बोलते हैं बस फोकस करो किसी एक चीज पे। आप किस तरीके से, व्हाट इज योर प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन सर? get get married with your art, get married with your देखिए, मैंने why I use marriage, because when it is coming to marriage, it is unconditional, unconditional giving without expecting anything. It is as simple as that, unconditional giving without expecting anything, and that too you have to do it consistently। देखिए, अगर हम शादी करते हैं तो हम ऐसा सोचेंगे कि चलो 5 साल निभा लेंगे, 10 साल, अरे भाई साहब हम लोग जब तक जिएंगे तब तक तुमको निभाना है। और that we are doing by default। एंड सेम फॉर्मूला अप्लाइज हियर कि मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि कल मैंने 1 घंटा मेडिटेशन किया तो तब आज करने की क्या जरूरत है, या कल मैंने 1 घंटा मेडिटेशन किया था तो मुझे कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ, अब करे नहीं करे, स्विच ऑन करे या स्किप कर। नो, नो, एब्सोल्युटली नॉट। स्टिक टू इट, स्टिक टू इट। देखिए, समंदर life is like a ocean, stop that, and unless you don't dive, you will never experience the beauty of your inner life। और एक और बात कि अगर आपके पास में सामने का किनारा देखने की, अगर आपके पास में करेज नहीं है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मिरेकल, मैजिक और एनीथिंग हैपन इन योर लाइफ। फिर है ना आप है ना किनारे पे खड़े रहो, सब लोग है ना डुबकी लगाते देखते रहो और घर जाकर सो जाओ। यू नीड टू डाइव, यू नीड टू डाइव इनसाइड द ओशन। जब आप टाइप करेंगे तो मेडिटेशन, मेडिटेशन। और देखिए, मैंने ये जो वर्ल्ड है इस बिकमिंग मोर एंड मोर मटेरियलिस्टिक। सबको लगता है इसके पीछे टाइम क्यों बिगाड़ने का? अरे भाई साहब, अगर इसमें टाइम बिगाड़ोगे थोड़ा तो ना आपको इतनी सारी क्लैरिटी आएगी कि आपको ना दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे शाह, फिर आपका रेकरेंस कब हुआ? मेरे को ये बताइए। 97।
And it's September, August, September 1997. So that is before 27 years. ऐसा क्या हुआ था आपके साथ जो आपको लगा कि the problem is coming back again? Or was it a part of a routine checkup with your doctor? I, there was no part of routine checkup. As I said earlier, I had a severe breathing problem. I started bleeding in my cough, and I went to my physician, and he said, there is something serious, and we No, but cannot take chance. that was the first time, or this is the second time also? Second time, second time, Okay. second time. हम्म। तो उस टाइम पे आपका क्या इमोशन था? बिकॉज एक बार ही हुआ, आपने उसको बहुत स्ट्रांगली लिया, यू स्टार्टेड लिविंग योर लाइफ, बट द सेकेंड टाइम व्हेन इट केम बैक, देन डिड योर इमोशंस चेंज? डिड यू ब्रेक डाउन? No, no. Say, yeah, join Harbinder, yeah, so would be one. This happened within a span of 6 months. So I had the issue. So on my neighborhood, I am always up. I am always up for the trouble shooting. क्यों हुआ किसने किया इन आटे में अब आगे क्या that's it. और देखिए एक है ना एक मैं मेरे बहुत सारे लेक्चर में मैं बोलता हूँ कि if you are on a war front बराबर तो आप है ना पॉकेट में हाथ डाल कर नहीं जा सकते. You need to have machine gun ready to fire. You need to have machine gun ready to fire. अगर आप फायर नहीं करोगे तो सामने वाला तुमको मार ही डालने वाला है. So why do they just sorry. नो प्रॉब्लम सर। तो मिस्टर शाह, यू नो आपको प्रॉब्लम आई, आपने उसको सॉल्व किया, and fortunately you were financially well off to be able to sustain the cost of treatment. A lot of people are not as financially strong to bear the cost of treatment. And आप आपकी लाइफ में अब पर्पस है, आप अपार्ट फ्रॉम गिविंग द टॉक्स, यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर, बट यू ऑल्सो टॉक अबाउट यू बीइंग द पेशेंट एम्बेसडर। सो ये आप उन इंसानों से जब मिलते हैं जिनको ये तकलीफ आई है, और उनके पास फाइनेंशियल मसल नहीं है टू सस्टेन द कॉस्ट, बिकॉज मेरे को याद है मैंने पिछले कॉन्फ्रेंस के अंदर जब मैंने कैंसर की करी थी, तो मैंने बड़ा कैटेगोरिकली बोला था कि कैंसर ट्रीटमेंट एक ट्रीटमेंट नहीं है कि आप गए, आपने ट्रीटमेंट कराया, खत्म हो गया। इट्स अ जर्नी। इट इज समथिंग दैट विल स्टे विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। So, what do you tell them? How do you give hope to someone who probably has the will to live, but no money to spend on this? Sir, there are a couple of factors. Number one, when I'm into counseling or advocacy, I lend my ears to the cancer patients and caregivers wholeheartedly. I listen to them. Number one. Number two, I don't tell them कि आपने क्यों किया क्या हुआ. Number three, next. What is next? So मैं उनको बोलता हूँ कि देखिए भाई साहब या जो भी है कि जो हो गया लेकिन अब आगे क्या करना है वो आप देखिए. एंड depending upon their situation, I help them getting their appointment coordinated with a specific oncologist. और मैं उनको ओपन ऑप्शन देता हूँ कि देखिए ये ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है, आपको जहाँ भी जाना है आप मुझे आई डोंट इंसिस्ट आप इनके पास जाओ. एंड आई डोंट गिव even 1% of medical advice because I'm not a doctor. So it's not falling in my review कि मैं कुछ advice करूँ.
So I simply help them to manage or rather getting their appointment coordinated with the respective oncologist and Harbinder ji, they gave over 500 500 से ज़्यादा oncologists मुझे personally जानते हैं and trust me these oncologists they are most kind hearted souls मेरा एक फोन पर काम करते थे एक फोन पर अपॉइंटमेंट मिल जाती है एक फोन पर पेशेंट को देख लेते हैं प्रायोरिटी में एंड व्हाट आर बेस्ट दे कैन डू इट दे डू इट एंड अरविंदा जी अनदर पॉइंट मैंने आगे आगे भी आपको बोला था कि आई एम 360 डिग्री सराउंडेड बाय वेल विशेस मैंने बहुत सारे पेशेंट्स कैरेगिवर्स को सपोर्ट किया है बाय यू नो कोऑर्डिनेटिंग देखिए I mean, cancer is such a big disease. You know, getting appointments, etc., is very difficult, and doctors have their own priorities, schedules. So, I am now in Bangalore. आपको मुझे बतानी है कि when I am calling the oncologist with this voice, this is the magic of the voice. मैं बोलूँगा डॉक्टर अरविंद जी, I'm Shrenik Shah. I'm a learning survivor. And sir, yeah, madam, this ex-person needs your immediate attention. Kindly support her or support him at your best. And I don't intervene into any of their personal commitment, any of the priorities. मैं उनको दो आज उठ के रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ कि सर या मैडम kindly do the best. मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ और देखिए सर ये लॉर्ड कृष्णा का मैजिक है कि मेरा काम हो जाता है मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि भाई साहब या बहन अपन कल मॉर्निंग में 9:30 बजे पहुंच जाना इधर मेरा नाम दे देना बाकी क्या काम हो जाएगा सो दैट इज द मैजिक दैट इज द मैजिक ऑफ द वॉइस और इसमें एक एडवर्टाइज क्या बताए रविंद्र जी कि जब मैं डॉक्टर के साथ मैं बात करता हूँ कि आप ये लेने वाला उनको ऐसा नहीं लगता है कि ये स्पैम कॉल है या ये मैजिक है उनको पता चल जाता है कि ये कोई कैंसर सर्वाइवर है एंड बाकी सब लोग मुझे मेरे काम से सोशल मीडिया से सब जगह से कहीं ना कहीं जानते रहते हैं ये भी ऊपर वाले की बड़ी बड़ी दुआएं हैं देने एंड शरणिक जी आपके एक्सपीरियंस है ठीक है ना आप बहुत यूनिक हैं ठीक है ना तो आई वुड लाइक यू टू look from the general point of view of so many cancer patients that you may have met interacted with supported आपको लगता है कि वो कहते हैं ना जहाँ चाह वहां रहा तो जहाँ पे जीने की इच्छा है तो वो सब फैक्ट्स को डिफाई करके जब उनको बोला जाता है कि आपके पास इतना समय है वो उसको डिफाई करके भी जी लेते हैं और दे सरप्राइज द डॉक्टर्स एंड देयर केयर गिवर्स कि बॉस ये इंसान क्या है कहाँ से ये इतनी शक्ति लेके आ रहा है क्या ये रियलिटी है बिल्कुल सर इट इज फैक्ट मैं देखिए मैं मैंने आगे भी बोला था फिर आपको बताऊं कि आई एम डाउन टू पर्सन मुझे I don't count what I have accomplished. I don't count, and again I do count what I have to accomplish, and therefore मेरे I am following five P's, five P for repeated five P's. First, purpose, clear purpose. Number two, passion. ये ना मैंने आपको बोला कि मैरिज करना है तो मैंने ये भी मेरा शादी का ये एक्सपीरियंस है with these five is number one is purpose, number two is passion, number three is perseverance, number four is patience, and the
last but new, that is performance. अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। और देखिए, अगर आप परफॉर्मेंस करोगे ना, तो है ना, परफॉर्मेंस की साइकिल है। परफॉर्मेंस is having a part of the passion, और फिर each accomplishment, each accomplishment is fueling your journey to become more and more patient, more and more passionate to stay to your clear purpose. देखिए, एकदम है क्लियर क्लियर क्रिस्टल क्लियर पर्पस होना चाहिए। When you know the clear purpose, then you know बाकी का सब कुछ you know ऑटोमेटिक आता ही जाएगा। सो सबसे पहले अगर पर्पस क्लियर पर्पस से शादी करनी पड़ेगी, अनकंडीशनल वेडिंग, अनकंडीशनल मैरिज। अगर ये किया तो बाकी है ना, फिर है ना अपने आप सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आ ही जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। एंड मिस्टर शाह, आपने कोई ऐसे भी केस देखे हैं जिसमें इसका रिवर्स हो जाए? फॉर एग्जाम्पल, जब आपके पास ये 5 P's हैं और आपने अपने आप को संभाल लिया, आपने डिटर्मिनेशन शो करी, एंड आपने अचीव कर लिया, अकम्प्लिश कर लिया टू वॉट एवर यू रियली वॉन्टेड टू। फॉर एग्जाम्पल, इन योर केस, you you know, you had a very clear purpose that I want to live, voice or no voice, my priority is to live. I think, you know, it should be 6 P's. एक prioritize भी करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? Yes, I will add that. Yes. यस। एंड बट कई बारी क्या होता है कि आप गिव अप कर देते हो। जैसे एक पेशेंट है, वो कहता है कि यार मेरे बच्चों के ऊपर कितनी मजबूरी आ गई है, वो बेचारा काम पे नहीं जा पा रहे हैं, उसके पैसे लगते जा रहे हैं, हे भगवान मेरे को उठा ले। ऐसे भी कुछ केसेस देखे हैं जहाँ पे उन इंसान बच सकता था, बट मेडिसिन काम नहीं करी, डॉक्टर का एफर्ट्स काम नहीं करे, बिकॉज द पेशेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ गिव अप। हैव यू सीन एनी सच केसेस? Sir, definitely होता है। And here again, it's all about individual choice। ठीक है, individual choice। In a simple manner, आपको एक बात मैं बताऊं कि if you are thirsty, if you are thirsty and if you keep on prolonging कि भाई मैं इधर रूम में बैठा हूँ, नीचे जाके मैं पानी क्यों पीऊँ, कोई मुझे कह दे जाए, that that is not going to work, that is never going to work। देखिए, देखिए, एक एक है ना हमारे गुजराती में गुजराती में एक सेइंग है कि स्मशान में जाना, किसी को स्मशान में क्रिमेटोरियम में छोड़ने जाना वो एक बात है, लेकिन अगर आप खुद मरेंगे नहीं तो मैं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मरना क्या चीज है। इट इज एज सिंपल एज दैट। आपको से योर एक्सपीरियंस, आई एम नॉट सेइंग कि इसमें मरना जरूरी है, बट आई एम ट्राइंग टू आई मीन aligning the your aligning the your question with this answer कि आपको खुद को करना पड़ेगा। You have to do it by default। एक और एग्जाम्पल कि अगर मैं ऐसा बोलूँ, ऐसा समझो कि मुझे जीना है, लेकिन मेरे लिए अरविंद जी को सांस लेनी पड़ेगी, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क बाय डिफॉल्ट। मुझे जीना है तो मुझे सांस खुद लेनी पड़ेगी, आपके सांस लेने से मेरा काम चलने वाला नहीं है। और एक और बात मैंने आपको, और मैंने बहुत सारे मैंने लेक्चर में भी बोला है, मैंने आगे आपको रोल्स रॉय का एग्जाम्पल दिया, लेकिन मैं ऐसा जो आपने भी क्वेश्चन किया ना कि उम्मीद 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 की मैं बात करता हूँ, उसमें एक बड़ा बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल, लाइफ इज लाइक अ लैम्बोर्गिनी, लाइफ इज लाइक अ लैम्बोर्गिनी। अब आपको डिसाइड करना है
कि आपको आपकी लैम्बोर्गिनी गैरेज ओनर के लिए रोज कमाई करके रोज देके खुश होना है, या फैमिली को बिठा के दुनिया भर में घुमाना है, दिखाना है कि यस I got Lamborghini. I got Lamborghini, shining Lamborghini. I can drive at for 400 kilometers an hour. So it's all about your approach. It's all about your thought process. It's all about your unwavering determination. It's all about your passion, commitment, and as you rightly said, it's all about your setting out priorities by default. And Mr. Shah, what is your message to the caregivers? Because environment अगर conducive होता है तो सब चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं. तो what is your message to the caregivers कि उनको क्या करना चाहिए? बिकॉज मैं आपसे बताता हूँ कि क्यों मैं ये पूछ रहा हूँ. मेरी हर कॉन्वर्सेशन में सबसे पूछा है कि जब आप बीमार होते हैं, कैंसर तो बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी बीमारी भी होती है तो लोग आपके पास आते हैं और लोग आपको बोलते हैं कि यार सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, जस्ट कीप पॉजिटिव. और पेशेंट बोलता है यार मुझे ये नहीं पता कि कल मैं सुबह उठूंगा या नहीं उठूंगा और आप मेरे को बोल रहे हो कि पॉजिटिव. तो ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी होती है. बहुत लोगों ने बोला है कि हमें ये सब की जरूरत नहीं है. ठीक है ना? सो व्हाट इन योर ओपिनियन एज अ पेशेंट एंड नाउ एज एन एडवाइजर शुड बी द रोल ऑफ केयर गिवर्स? उनको क्या करना चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए? संजय, मेरे पास में एक बड़ा सॉल्यूशन है जो आपने, एंड आई मस्ट से कि you asked a very valid question. Rather, this question has given me an opportunity to address such kind of challenges. Sir, I am official patient ambassador of Indian Cancer Society. That's number one. I mean, Indian Cancer Society, Delhi, and for quite few weeks or a few months, I am moderating YouTube, Facebook, and also live webinars under the title of Fridays with Shrenik at 6 p.m. Indian time. I am moderating the event. I am inviting different top of the line cancer specialists, one specialist at a time, to share their knowledge, to share their expertise with the community, including question and answer session. Now, during my age talk, while I am moderating, I do mention with the if you are not qualified medical professional, don't simply rely upon details available on internet. Stick stick to the formula of consulting whoever medical professional you feel appropriate, but don't don't gamble with your life, don't play shot in dark. If you are not qualified doctor, and you know what, देखिए मैं आपको शुरू में बोलने का भूल गया, that is one more advantage of this today's session. The month of October is about breast cancer awareness month, breast cancer awareness month, and I mean we respect women empowerment to the core in each and every sector. There is no discrimination at any point of time, and despite being a male moderator, I am conducting Facebook, YouTube, and also live webinar about breast cancer awareness every Friday at 6 p.m. and inviting
women community to participate and to know much more about breast cancer treatment protocols. And even they can ask questions because what happens is that during private consultation, oncologists doesn't have enough time and they have different set of priorities, so they cannot answer anything. But during this one hour session, they speak out each and everything, and that's how you can gather dependable, reliable, and sustainable knowledge from the oncologist. Because whatever you get from internet, that is a general perspective, general information, and one formula, one protocol which stick to one person. It doesn't. It's not necessary that that can be implied to you or someone else. So therefore, I'm conducting this webinar, live webinar, Friday's page running every Friday at 6 p.m. So these are something which is close to my heart, and trust me, I am enjoying doing this so much that every single webinar, every single live webinar, fueling my journey, and rather indirectly, I am being blessed. Indirectly, I am being well wished on the case of about life में कितना दिन या महीना या साल बच जाए वो पता नहीं, लेकिन इन लोगों की वेल विशेष है कुछ ना कुछ तो आगे जमा होता है। जगह बैंक बैलेंस नहीं पड़ेगा, लेकिन लाइफ का बैलेंस तो पक्का पड़ेगा, ये मुझे मालूम है। बिल्कुल। एक और क्वेश्चन है जो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आपके एक्सपीरियंस में, सिंस यू सेड दैट यू नो मोर देन 500 oncologists or 5,000? 500, 500। 500. So you know 500 oncologists. डू यू, एक ये डाइकोटमी है कि मेरे को लगता है कि जिस तरीके से डिटेक्शन की न्यूज़ ब्रेक करी जाती है, उससे, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम बात भी करते हैं, आप तो कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कि जिस तरीके से आप बात करेंगे उससे सामने वाले को अनस्पोकन वर्ड्स, अनस्पोकन मैसेज भी मिलता है। ठीक है ना? तो क्या डॉक्टर का रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले को या तो होप दिखाई दे या डिजेक्शन दिखाई दे? ठीक है ना? सो व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ द डॉक्टर एंड व्हाट शुड बी डन राइटली वाइल ब्रेकिंग द न्यूज? स्पेसिफिकली मैं इंडियंस के लिए बात करूंगा बिकॉज इंडियन डॉक्टर्स जो से हैं ये ओवरवर्कड हैं। हमारे यहाँ पे पेशेंट ज्यादा हैं, डॉक्टर कम है, तो डॉक्टर के पास समय नहीं होता है। ठीक है ना? और उनके लिए जो चीज आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है लाइफ की, उनके लिए इट इज येट अनदर पेशेंट। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? सर देखिए, मैं मेरा इसमें टेकन वेरी सिंपल है कि irrespective of their priorities, irrespective of their profession, I rather consider them as a real human being for simple reason। देखिए, एक बात आपको बताऊं कि अगर आपको डॉक्टर, and I must say I have interacted with so many oncologists on one-to-one basis for patients, and every other day I have seen their approach, particularly the young generation of oncologists, and even those who are into late 40s, 50s, or even above say 50s, that their approach is क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। देखिए, एक बात है, मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं कि अगर आपको बुखार आया है तो आपको पता चल जाए कि भाई मुझे बुखार आया है, मैं कोई दवा ले लूंगा, सेटल हो जाएगा। लेकिन when there is a serious disease, when there is a serious disease, it is required to be addressed
meticulously and timely. क्योंकि अगर if I would not tell you everything black and white, it's not going to देखिए कुछ समझ गया है your life is at the risk, not doctors. डॉक्टर को वो तो खुद का काम करता है करता है आज नहीं तो कर दूसरा आएगा दूसरा कर but 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 you are on the top of a fire. You are on the top of a fire कब जल जाओगे पता नहीं चलेगा. So it is essential the and I must admire, मैंने आपको बोला कि बहुत सारे कोलेजेस के साथ में मैं इंटरेक्ट डेली बेसिस पर करता हूँ. I admire their clarity to the core. Admire their clarity to the core. ठीक है सबके प्रायोरिटीज अलग है challenges other things that there are so many factors but here again here again, it's all about survival. It's all about saving the life whoever is detected with the cancer or any disease. So उसमें और मैं एक बात आप लोग सर आपको मैं with the due respect with the due respect to the medical professionals outside India के इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं ना वो लोग they are contributing so much कि है ना आपका दिमाग काम नहीं करेगा. there are instances there are instances कि अगर इनके ओपीडी में 100 150 200 भी पेशेंट आएंगे ना तो नहीं बोलेंगे नहीं अब कराओ. no, I mean they are full of humanity, I must say that. And it is, I mean, that is rather not occurring somewhere else. Okay, then it is a time constraint. कि अब अभी 6 o'clock my duty is over. Will come tomorrow. I mean, this is definitely I have seen spectacularly that this is not happening in India. This is definitely not happening in India. And एक बात बताऊं कि this is, I must say, this is incredible India. This is incredible India, full of humanity, full of humanity. देखिए साहब पैसा पैसा पैसे के बिना आप भी काम नहीं करेंगे मैं भी नहीं करूंगा लेकिन पैसा खर्च करने के बावजूद आपका काम हो जाए आपकी लाइफ सेव हो जाए दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. बिल्कुल मिस्टर शाह, आई थिंक ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, बिकॉज मैंने तो शायद 200 250 डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्शन करी है, उनको इंटरव्यू किया है, और काफ़ियों के साथ मैं बहुत क्लोजली एसोसिएटेड रहा हूँ. अ, और मैंने बाहर जाके भी, ओवरसीज भी डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्ट किया है. एंड मैं एब्सोल्युटली इवन हम जो इंडियन डॉक्टर्स बाहर काम कर रहे हैं उसका डिफरेंस, उनकी सक्सेस ही यही है, बिकॉज जिस सोशल फैब्रिक से हम आ रहे हैं हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट एम्पथी भरी हुई है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. दैट इज वेरी सो इंपॉर्टेंट. और मैं आपको है ना इसमें एक जो डॉक्टर के डिग्री लगाते हैं ना तो उसके आगे या पीछे ना उनको लगना चाहिए कि एमएस लगाओ एफसीएस लगाओ जो लगाओ लेकिन है ना इसके ब्रैकेट में ना डॉक्टर के आगे डॉक्टर डॉक्टर का इनिशियल और नाम के बीच में ना आगे एम्पैथी लिखो ब्रैकेट में एम्पैथी लिखो. दैट इज एसेंशियल. एंड सर देखिए मैं आपको मैं आई वांट टू शेयर two examples. I mean, which I don't think it will be out of the place. I mean, since you mentioned about the Indian doctors and medical professors, few years back, one 24 weeks pregnant lady, she approached to me through Facebook. I mean, she had thyroid cancer and she had a fear like having a recurrent cancer and so on, and she was struggling for getting appointment in a big cancer hospital. So she called me up after cancer.
ये ना आवाज का मैजिक देखिए या लॉर्ड कृष्णा का ब्लेसिंग देखिए वो मुझे पता नहीं है. So she called him and she said, hey, I'm having this problem and I'm unable to get instant appointment and I'm devastated. So, well, when she called, I had no clue like what I'm going to do. But, you know, and I think with those 5 P's and Abka priority wala 6 P, I said, don't worry, give me some time. I googled and found out name of that doctor in a particular hospital where she wanted to be examined. Surgery. I called that doctor and I briefly explained, sir, I am CA survivor. My name is so I am from Ahmedabad and someone from this place. She is 24 weeks pregnant and she needs your immediate attention. Certificate despite every commitment, despite every surgery schedules, etc. He was so kind, incredibly kind, that he said, ask her to come day after tomorrow, room number so and so at 9:30 a.m. And she went there, everything was taken care of. So they gave now इसमें मेरा क्या फायदा हुआ? I could manage to get appointment. मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए लेकिन I could मैं I'm not a professional medical professional मेरा होने वाला है नहीं ये लाइफ में अगले साल अगले मंथ में देखा जाएगा. So but I could play a very small role in getting things done not only for that lady but a baby who was yet to born. So that is the magic of the voice. That is the magic of purpose, passion, perseverance, performance, and आपका priority कि भाई से I mean अगर आपको करना है चल कीजिए. I mean फिर सोचो मत. Don't मैंने बोला ना कि मेरे एक बॉडी सेवन के अंदर do it now. It's like not tomorrow सोचेंगे देखेंगे मेरे पास में टाइम नहीं है. No time for excuses. No time for excuses. Excuses जब करना है तो ऊपर जाके करना इधर नहीं. तो शरणिक जी, आपने कहा कि आप आई रिमेम्बर, मैं एक मिनट नोट्स निकाल रहा हूँ, आपने कहा था कि 20 मिनट खुद के लिए निकालने चाहिए जिसमें आप जो चाहते हैं वह करिए, चाहे आपने व्हाट्सएप करना है, इंटरनेट देखना है, जो करना है करिए. दूसरा होता है कि 12 मिनट की मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए और कंसिस्टेंटली करनी चाहिए. एंड तीसरी चीज आपने कहा था कि 8 मिनट म्यूजिक जरूर सुनना चाहिए, गाना चाहिए, म्यूजिक के साथ एसोसिएट होना. आप म्यूजिक के साथ कैसे एसोसिएट होते हैं? डू यू लिसन टू म्यूजिक, डू यू सिंग? Yes, no, sir. I'm singing internally. I can, अगर मैं if I start singing, लोग भाग जाएंगे. So I'm not singing, but you know, let me tell you. सर, Uh, हम नहीं भागेंगे सर. कुछ दो लाइनें आप गुनगुनाइए, बिकॉज लेट इट बी द फर्स्ट person using the device to sing also. sir, मुझे I want देखिए मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और मेरी कोई कंपैरिजन की पॉसिबिलिटी नहीं है लेकिन one there are two songs which are close to me. दोनों लता मंगेशकर के लता मंगेशकर जी के. one is लग जा करे फिर ये मुलाकात oh no, that is my most popular song at every single time. And secondly, aligning with my voice. मेरी आवाज की मेरी पहचान है and that's my unique identity. पर देखिए मैं फिर आपको बताऊँ मैं बहुत छोटा आदमी हूँ मेरी कोई कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है. But this is the life. Sorry, this is the life. uh, you know, I'm living, and yes, as I said earlier, I'm 72 now. I'm going at a jet speed क्योंकि मुझे पता नहीं है कि how many years are left. Yes, I'm committed to
as the horizon, and also, God willing, or Lord Krishna blessing wall. So I would love to build legacy as a Shrenik Shah as well. बाकी तो सब ऊपर वाला कि देने बस I'm so about it. There is no regret. And again, I'm telling same thing. LTSM and long-term specific memory loss. I never felt कि I have lost my voice, and this is the magic of Almighty, which made me unstoppable as a speaker, thought leader, TEDx speaker. और मुझे ये मानने में कुछ भी ज़्यादा बोलूँगा अच्छा नहीं रहेगा. But you know, this is the magic of the life. And trust me, there is no complaint at any point of time. Any point of time. मेरा शायद बैंक बैलेंस कोई मिलियनर बिलियनर जितना नहीं है, लेकिन मेरे पास में वेल विच इज मैं आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई कैन से दैट. सर लग जा गले का कुछ तो गुनगुनाइए, बिकॉज आपकी वॉइस में जादू है अभी. मैं छोड़ूंगा नहीं सर. हम हमको मिली है आज ये कुछ मुझे से आई एम नॉट गुड एट मेमोराइजिंग द लिरिक्स, बट पर मैं इतना बताऊँ कि जो टाइम मिला है लाइफ को जी लीजिए. एंड सर, एक और बात, मैं आपने जब ये लिरिक्स का बात किया ना, आई एम फॉलोइंग टू लाइन्स of Invictus, a very popular Invictus poem which was written in 1800 by a poet. I forgot, I think Henry. Oh, so the title is these two lines are from Invictus poem, that I am the master of my fate and I am the captain of my soul. अगर आप ये दो चीज फॉलो करोगे ना, तो ट्रस्ट में यू बिल्कुल. कुड बी अनस्टॉपेबल. यू कुड बी अनस्टॉपेबल. आपको ना दुनिया की कोई चीज आपको रोक नहीं जा पाएगी. इट इज एज सिंपल एज दैट. आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए. You need to have confidence, and you need to show up consistently, and that is the magic of the life. मिस्टर शाह, आई थिंक दिस हैज बीन सच अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन. मेरे को लगा था कि हम आधा घंटा बात करेंगे, पौना घंटा बात करेंगे, बट हमने 2 घंटे बात करी. और मेरे को, जैसे आपने बोला था ना कि अ, हम पूरा दिन बात कर सकते हैं, मेरे को लगता है कि अगर हम चाहें तो पूरा दिन इसके बारे में बात कर सकते हैं, और ये बहुत मीनिंगफुल चीजें हैं. बट सम ऑफ द टेकअवेज दैट आई हैव, मैंने क्यों प्रायोरिटी वर्ड ऐड किया था आपके पीस में, वो इसलिए था क्योंकि आपने प्रायोरिटाइज किया था टू लाइफ ओवर वॉइस, एंड दैट इज व्हाट गिव यू द पर्पस. And so I think that P was very, very important. Second thing that you mentioned was, apne you said, when I went to my doctor, I trusted him blindly. uh, मेरे को लगता है कि and I keep talking about it, that trust and faith are two different things. हमें ट्रस्ट है डॉक्टर पे क्योंकि वो ट्रेंड है, उसने बहुत सारे केसेस करे हैं. बट मेरे को फेथ है डॉक्टर पे कि वो मुझे ठीक कर देगा. इट्स लाइक व्हेन कुछ, जैसे हमारे इंडियन सोसाइटी में लोग पंडित के पास जाते हैं या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कोई नया काम शुरू करने से पहले, और अगर एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि बेटा ये राइट टाइम है, तो जा, तेरा नुकसान नहीं होगा, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं से अंदर से फेथ आती है कि अब तो गलत हो ही नहीं सकता है. तो आप बिल्कुल जाके फुल कन्विक्शन के साथ काम करते हैं. आई थिंक हैविंग फेथ इन योर डॉक्टर and your own self is really, really important.
Third thing that you mentioned, सर जी, सर ये आपने जो वेट की बात की ना, मैं इसका एक सिंपल लॉजिक आपको मैं समझा दूं, which you may like to cover in the podcast. ठीक है सर, एक बात है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, आपको स्प्लिट के डॉक्टर स्प्लिट वालों के पास तो जाएंगे ही, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएंगे. नाउ irrespective of his profession, irrespective of his skills, expertise, experience, whatever. Let's not forget that he is not your enemy. Let's not forget he is not your enemy. अगर वो enemy होगा so I mean then you know it is your bad luck. And fortunately, doctor is not a single doctor is your enemy. अगर आप है ना ये पकड़ के चलोगे ना तो है ना समझ लीजिए 95% आपका काम हो गया. बिल्कुल, बिल्कुल. This is so true. This is very, very important point that you have brought up, Mr. Shah. And I think it is not just for our conversation, but otherwise for the healthcare industry, जहाँ पे we are plagued with distrust. I think this is important for people to understand. And the next thing that you had also brought up is very, very important, commitment. Commitment to yourself. कि अगर जो मैं कर रहा हूँ, तो जैसे आपने बताया ना कि तालाब में डुबकी मारोगे तभी आपको कुछ कर पाओगे, बाहर खड़े होने से आप सिर्फ विश कर सकते हो. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू ब्रॉट अप इन द कॉन्वर्सेशन वाज, यू नो, make intelligent and timely decisions. You know, because I was making these notes, so these were certain things which were extremely important. And then of course your 5 P's and now the 6 P's. uh, you know, passion बहुत important है सर. पैशन बहुत important है क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है फ्रॉम ऑल द चैलेंजेस. एंड मेरे को लगता है जैसे आपने बताया कि पैशन होगा तो आप, वेदर आपने म्यूजिक की बात करी, हो सकता है किसी को पेंटिंग में पैशन दिखता हो, किसी को किसी चीज में हो, बट अगर आप वो चीज करोगे जो आप एंजॉय करते हैं, उस मोमेंट में, दैट इट सेल्फ इज अ मेडिटेटिव मोमेंट बिकॉज इट इज टेकिंग योर माइंड अवे फ्रॉम all the distractions which are otherwise there. So that is very important. And uh, there was one more thing that had come to my mind, which I wanted to speak about. uh, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो मेरी तरफ हो गया सर. हाँ, आपने बात करी थी कि यू नो, यू हैड मेंशन्ड समथिंग दैट यू हैड सेवरल रिजेक्शंस, ठीक है ना, and but you kept going on because that rather ignited your, what you mentioned, that ignited the fire to do something and prove them wrong, you know. मेरी अपनी जिंदगी में ऐसा हो चुका है बिकॉज जब मैं फर्स्ट टाइम हेल्थ केयर में घुसा था, तो मेरे को 1 साल 2 साल नहीं, एक decade, 10 years, I did not succeed. And everybody, including my well wishers, used to tell me that Harbinder, you know, छोड़ दे इसको, इसमें पैसा नहीं है, you are ruining your career. बट कहीं ना कहीं अंदर से एक जनून था, जो आपने बोला ना कि पागल लोग बोलते हैं आपको, वो थोड़ा सा पागलपन होना जरूरी भी है टू डू समथिंग विच अदर पीपल will not find logic in. So I think that madness is the only thing that can trigger the addiction towards success. And I think that is what you have shown, जिसको हम determination भी बोलते हैं. uh, so that is what it is. And you know, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर ये आपने जो डिटर्मिनेशन की बात बोली, एंड सिंस यू आर इनटू healthcare sector for a long time, and I must say your timeless contribution. See, I want to give a very clear cut, precise, and understandable, easily understandable example. You know, we all are familiar with the radiotherapy.
radiotherapy is given, is a guided radiotherapy is given for killing the cancer tumorous cells and so on. Same formula, same formula is applied in our life. You need to be और उसको जो बोलते हैं ये जो रेडियोथेरेपी है that is laser treatment, laser radiotherapy. Same formula applies in our life. You need to be you need to have a laser focused mindset. अगर देखिए इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर बुमरा का 140 किलोमीटर का बाउंसर अगर आ रहा है, अगर आप देख रहे हैं, and if you have a focused mind, laser focused mind as a MS Dhoni, then you can convert that bouncer into massive six. That you can convert that bouncer into massive six. Otherwise, आपको आपको अगर आपके पास में laser focus mountain नहीं है, अगर आप इधर उधर देखते हैं तो आप bolt होने वाले हैं. You are or else we are going to cut out. It is as simple as that. So इसमें laser focus mindset is important, and that's what I am I am following 24/7. जो है शायद मेरे फैमिली में बोलते हैं कि आप आपको किसी और चीज में ध्यान नहीं रखते हो, या अरे भाई आप लोग अपना ध्यान रखो, मेरे लिए भी आप ध्यान रखो, मुझे मेरा फोकस पता है कि मुझे क्या करना है. That's it. I mean, and I don't compromise on that aspect at any point of time. Uh, Sorry, Brilliant. आपको No, मैंने no, absolutely. इंटरप्ट किया. I think that is brilliant, Mr. Shah. I think, I think this is a good note to end the conversation on that लेजर फोकस रहना चाहिए. एंड आपके लिए अगर आपने प्रायोरिटाइज कर लिया है, आपने आपको पर्पस मिल गया है और उस पर्पस के लिए आप पैशनेट हैं, तो आप परसेवेयर करेंगे और परसिस्टेंटली आप परफॉर्म करेंगे, एंड तभी आप अपने पर्पस को अचीव कर सकेंगे. सो आई थिंक एंड इफ द पर्पस इज टू लिव, I think it is very, you are making it, you cannot say impossible, but I think you're making it very tough for everyone else to not let you live. तो आपके अपने हाथ में है. डॉक्टर अपना काम कर रहा है, मेडिसिन अपना काम करेगी, लेकिन आपको जज्बा रखना है जिंदगी के लिए और आपको अपना काम करना है. दिस इज व्हाट माय लर्निंग इज फ्रॉम योर लाइफ. तो थैंक यू सर सो. हाँ जी सर. Sir, एक और I mean, I know it's taking bit more time, but I would like to deliver right message. आपने आगे कैंसर की बात की, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की बात की, तो देखिए अभी मैंने TEDx में टॉक डिलीवर किया था 10 दिन पहले. आई मीन दैट वाज एट मेडिकल कॉलेज. तो मैंने एक स्लाइड रखी थी. मैंने स्लाइड में लिखा था, सर आप जरा ये सुनिएगा, सो यू विल गेट आइडिया. मैंने उनको बोला था, मैं दे वर ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स, तो मतलब तुम आई मैं शोन दी स्लाइड, और मैंने स्लाइड में लिखा था कि डेट DATE date oncology, date oncology, but not oncologist. Why you have to date oncology? Because there is scarcity of oncologists in India. There are too many cancer patients, and a lot of 2 tier and 3 tier cities need a lot of cancer specialists, because I mean metro cities में छोटे गाँव वालों को आने का बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. Treatments are becoming expensive, and found out this that. So if you choose oncology, then I mean apart from your profession, this is the best this is the best ever profession to serve the humanity, to serve the human community. And मेरे इसके लिए आपको ना एम्बेसडर बनने की जरूरत नहीं है. अगर आप ये oncologist बन गए, लोगों का सेवा किया, that
means you are global goodwill ambassador as a human. It is as simple as that. So this is my uh, kind submission to all listeners, to all readers that choose oncology at your best and trust me. and जैसे मेरे साथ में भी लॉर्ड कृष्णा है, आपके साथ में भी लॉर्ड कृष्णा ऑटोमेटिक आ ही जाएंगे. Bilkul. I think that is a very valid point, that do something that can help you contribute to life of people around and make a difference. So great, sir. Dr. Shah,